we walk inside, you get to see numerous barrels like this. Now they are made from oak wood and we bought them here in India from Europe and America. One barrel will cost us somewhere between 40,000 to a lakh and we can use them for 10 years. 10 years we can have multiple wines aged inside them. Now the साल तक हम इन barrels को एक ही purpose के लिए use करेंगे, that is aging. And whenever any wine is aged, there are two different things actually in your wine जो develop होती है. First thing would be the texture and mouthfeel of your wine, and second thing is the flavor and aroma of the wine. So what we'll do first, we'll get some wine put in a barrel and we'll place this barrel inside the stove under some sound conditions. Now this is made from wood and wood हमेशा porous material होता है. Porous means इस wood में छोटे-छोटे pores होते हैं जिसके through एक minute amount of oxygen continuously wine के साथ contact में आता है. And जब इस wine and oxygen contact होता है एक छोटा सा chemical reaction होता है. And due to this chemical reaction, any compound जो wine को कड़वा बनाता है या harsh बनाता है, ऐसे compounds को target करके smoothen out किया जाता है, break down किया जाता है. And इसी की वजह से your wines would get an easy, softer, supple and mellow flavor all its mouth. And that is why we hear the term, the older the wine gets, the better it will become. Because the older you age every wine inside a barrel, and after that in a bottle, under the right conditions, the smoother and supple the wine will be. And second thing, whenever the barrels are made, we burn them from inside. Now this burning process would, we call it as toasting. And toasting would allow some of the compounds from your wooden barrel to come in your wine. Now these compounds are part of your wood. They are naturally present in your wood, and whenever they are in your wine, they just act like some flavors. Now these flavors would be like vanilla, coconut, cedar, dry tobacco, spicy, smoky, and green nuances in the wine. Whenever you could experience these types of fruits, any type of wine will get them from the barrel itself. And during the aging, and this is what aging is, and this is what we do for our wines in July between 2 to 18 months. 2 से 18 महीने तक हमारी wines को हम age करते हैं barrel में, and this is what happens. So before we head in, any questions and doubts? It's more or less the same, but in order to get a sparkling wine, in order to get the sparkles in your wine, you have to ferment it twice. And during second fermentation, we'll trap the carbon dioxide, making it naturally carbonated. Expiry, there's no expiry kind of a date to a wine. It always depends upon the storage conditions you provide to the wine. Alright, so let's walk inside. Okay, any other route we have of 5? We have 4. Okay, you can just grab a barrel and that one. Chat with opportunity. Third is to take a snip, and fourth is to sip. See, swirl, snip, and sip. 4 basic steps we have already for these 6 different styles. These are the 6 different bottles will be pouring in the same sequence as they have displayed in the curve. So after the tasting, you can compare the middle and you can take a picture of this ladder for your reference, right? So the first wine coming to your glasses, my colleague will be pouring it. You will call it as Brut Tropical. Now it's a rosé sparkling by Shula. Let's tasting it.
ఫస్ట్ ఎలా చూడాలి చిన్న స్లిప్ స్మెల్ చూసి Extreme aromas, get some fruity notes like guava, grapefruit, etc. And finally, in terms of odors, sprays, such as body essentials. Cheers. Shannon, we've got Riesling and we've got chili. That's just a title. Oh, this is and when you sip this wine, this will be the most dry cellar wine we offer. Wine. Now when I say it's a dry wine, this wine wouldn't offer you any amount of sweet perception. It only has 1 gram or 1 liter of sugar inside. So that's why we say it's a dry wine. And if you're diabetic, if you're someone who loves to count on calories, this is something you would prefer having. Right? It's 1 gram or liter of sugar and 17 grams. When you feel it on your palate, that is the biggest difference you'll notice in the previous investment. So this has a very smooth, velvety and easy texture right on your palate. And it also offers you a hint of sugar. It's about 8 grams a liter on this. And this wine has about 13% of alcohol. This is Tindori. Now Tindori is nothing but a place here in Nasik, which is about 50 kilometers away. And where Sula has got their second winery and where we grow the grapes Chardonnay. That is now we have a brand called Tindori. रासा ये नाम आता है हमारे कॉम्प्लेक्स यूनिक डिशेस से His name is Mr. Rajiv Samant or Rajiv Samant is what Rasa means and that is why we only allow our best customers to be poured right now we call it as Rasa Simple Test which we are making the wine from 4 to 6 months in a new French home. We compare a taste profile, aroma profile of a red wine to a white wine. This feels much more intense, much more but mature and old in style. Sauvignon, aged for the most. This is the most selling wine of Sudan. We call it as. I'll just give it out. Apricot, pineapple, and raisin-like notes. This wine contains 13.5% of alcohol and offers 100 grams of sugar. That's the last. These are the 6. You can come in here, take a picture.
अभी हम लोग ऑन दी वे है घर के लिए, नगर के लिए। अभी चाय पी रहे हैं हम लोग। थोड़ा नासिक हम लोग को क्रॉस कर लिया, अभी वहाँ से निकल गया। अभी चाय पी के फिर आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारे घर से 2.5 आवर्स लगता है। हमको लेट हो गया, इसके वजह से और लोकेशन देखना था, लेकिन टाइम नहीं हो पाया, नाइट हो गया। और प्लस बहुत अच्छी जगह है, आप लोग ज़रूर आइएगा अगर महाराष्ट्र में आता है, नासिक में घूमने के लिए आए। और मोस्ट फेमस है कि वाइन का फैक्ट्री देखने लायक है, कैसे बनता है, क्या है, कैसे फर्मेंटेशन होते हैं। आपको फ्री ऑफ मतलब पर पर्सन आपको 600 करके प्राइस गिरता है। और प्लस आप टूर देते हैं, उसके 600 जो लेते हैं आप अंदर यूज़ कर सकते हैं उसको। और यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पे घूम सकते हैं, फैक्ट्री देख सकते हैं, वो टूर दे के फिर टेस्ट भी करने को देते हैं आपके उसी पैसे में जो एंट्री करते हैं। एक्स्ट्रा से पैसे की ज़रूरत नहीं, वो कूपन टाइप देते हैं, उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं जाना है तो आप उसी से आप वाइन खरीद सकते हैं या दूसरे गिफ्ट खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा है, अच्छा लगा जाने, मतलब बहुत मुझे तो अच्छा लगा। आप लोग अगर आते हैं तो प्लीज़ आप लोग बिना वाइन देखे, वाइन फैक्ट्री देख के मत जाइएगा। वाइन सुला वाइन ऑफकोर्स यू शुड वॉच। एंड बहुत ধুনীয়া লোকেশ্যন হয় চাবলৈ। নাচিকত বহুত আছে। আৰু এটা লোকেশ্যন হ'ল, মই লোকেশ্যনকেইটাৰ নাম কৈ দিছোঁ। মই প্ৰথমতে ভিডিঅ'টোত কোৱা নাছিলোঁ যে মই ক'ত গৈ আছিলোঁ। মই গৈ আছিলোঁ এতিয়া নাচিকত, এতিয়া লাষ্ট গম পালেই চাগে আৰু তথাপিতো ফিনিচিঙত কৈ দিছোঁ। এটা লোকেশ্যনত ত্ৰিম্বকেশ্বৰ টেম্পল, সেইটো হ'ল শিৱ মন্দিৰ। তাত আমাৰ বহুত টাইম গুচি গ'ল, বিকজ লাইনত ধৰিলোঁ। যদি লাইনত নধৰিব নিবিচাৰে তেতিয়া 200 কৰি প্ৰাইচ হয়, তেতিয়া হাফ এন আৱাৰতে আপুনি সোমাব। কিন্তু মন্দিৰত গৈছোঁ তেতিয়া কিয়নো এক্সট্ৰা পইচা দিওঁ ন, লাইনটো ধৰি লৈ গ'লে ভাল লাগে। সেইটো কাৰণে মই লাইন ধৰিলোঁ। আৰু মোৰ দেৱৰাণী তাহাঁতিও ধৰিলে, সেইটো কাৰণে আমাৰ তাতে বহুত টাইম গুচি গ'ল। আৰু লেট হ'ল কাৰণে সোনকালে পাব লাগিছিলে, কিন্তু কামৰ কাৰণে, কিবা এটা কামৰ কাৰণে লেট হৈ গ'ল। আৰু একচুৱেলি বাইলাক মানে কি হ'ল, মোৰ ঘৰৰ যেনেকৈ ঘৰকুল পইচা আহে ন, जैसे घर कुल का पैसा आता है, वो डॉक्यूमेंटेशन देना चाहिए था। डॉक्यूमेंटेशन नहीं देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, घर का ताला तोड़ के दूसरे को बोल के फिर डॉक्यूमेंट देना पड़ा, बिकॉज आज लास्ट डे था। तो वो करने के चक्कर में हमारा 1 आवर लेट हो गया। आधे रास्ते में रुक के वो हम लोग किए। तो आज का फिर हम लोग गए नेक्स्ट लोकेशन, ग्रेप्स का जो फार्म है उसके अंदर ही होटल है। वो बहुत अच्छा लोकेशन है, आप लोग देखिए। और बहुत सारी लोकेशन है नासिक में, ऐसा नहीं है ना कि ये 3 ही लोकेशन है। मेरे टाइमिंग के हिसाब से आप लोग आते हैं तो 2 दिन ऑफकोर्स रुकिए नासिक में और घूमिए। फिर आज का वीडियो अभी बहुत लेट हो जाएगा मुझे घर पहुँचने के लिए, तो इसके वजह से मैंने सोच रही हूँ आज का वीडियो, और मैं वीडियो आई थिंक 2 भाग में दूँगी, एक ही भाग में देने की पॉसिबल नहीं होगी शायद। और ये वीडियो भी लेट जाएगा, बिकॉज मैं अभी गांव में आई हूँ तो बहुत इधर उधर चालू रहता है, तो इसके वजह से मैं वीडियो भी लेट से दूँगी। बट बहुत अच्छा लगा, लोकेशन बहुत अच्छा है। आप लोग আপোনালোকে আহিবচোন ইয়াত নাচিকত কেনেকুৱানো লোকেশ্যনটো চাব সকলোৰে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। এণ্ড টিল দেন বাই বাই।